जय हिंद। आई एम डॉक्टर फिरोज खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, एस इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है कैटालिटिक प्रमोटर एंड सेकंड इज कैटालिटिक पॉइजन। और हम लोग इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आज पढ़ेंगे। तो मैं आपको आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। साथियों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने कैटालिटिक प्रमोटर्स। दो सब्सटेंस which increase the reactivity of the catalyst is known as catalytic promoters. Those substance which increase the reactivity of catalyst is known as catalytic promoter. For example, in Haber process, iron behave as catalyst, but molybdenum behave as catalytic promoter. Iron behave as catalyst, but molybdenum behave as catalytic promoter. Second example, in reaction vegetable oil to vegetable ghee, nickel behave as catalyst, but tellurium behave as promoter. ठीक है ना। और हम लोग चाहे तो एक एग्जांपल और कर सकते हैं कि व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट एंड फॉर्म मिथाइल अल्कोहल, इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड बिहेव एज कैटलिस्ट, but chromium oxide is catalytic promoter। ठीक है ना। तो ये थे बेटा कैटालिटिक प्रमोटर के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। दो सब्सटेंस which increase the reactivity of the catalyst is called catalytic promoter. For example, in Haber process, iron behave as catalyst, but molybdenum is catalytic promoter. In reaction formation of vegetable ghee from vegetable oil, nickel behave as catalyst, but tellurium is catalytic promoter. And in manufacturing of methyl alcohol, zinc oxide and copper oxide behave as catalyst, but chromium oxide behave as promoters. आता है नेक्स्ट कैटालिटिक पॉइजन। Those substance which destroy the reactivity of the catalyst is known as catalytic poison. Those substance which destroy the reactivity of the catalyst is known as catalytic poison. Catalytic poison के एग्जाम्पल क्या है? In Haber process, iron behave as catalyst, but carbon monoxide is poison. Carbon monoxide is poison. Iron behaves as catalyst, but carbon monoxide is poison. In Rosenmund reaction, palladium behave as catalyst, but BaSO4 is poison. इसमें जो BaSO4 है वो पॉइजन। ठीक है ना। तो रोजनमुंड रिएक्शन में पैलेडियम कैटलिस्ट है और BaSO4 पॉइजन। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर, प्लेटिनम इज कैटलिस्ट, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजन। इन कॉन्टैक्ट process, platinum is catalyst, but arsenic oxide is poison. In contact process, platinum is catalyst, but arsenic oxide is poison.
तो आपने देखा, एक बार लास्ट बार बताता हूं, व्हाट इज द कैटालिटिक प्रोमोटर्स? Those substance which increase the reactivity of the catalyst is called catalytic promoter. In Haber process, iron behave as catalyst, but molybdenum is catalytic promoter. In reaction formation of vegetable ghee from vegetable oil, nickel is catalyst, but tellurium is catalytic promoter. In manufacturing of methyl alcohol, zinc oxide, copper oxide is catalyst, but chromium oxide is catalytic promoter. Next आता है catalytic poison. Those substance which destroy the reactivity of the catalyst is called catalytic poison. For example, in Haber process, iron behave as catalyst, but carbon monoxide poison. In Rosenthal reaction, palladium behave as catalyst, but BaSO4 is poison. And in manufacturing of water, platinum is catalyst, but carbon monoxide poison. In contact process, platinum is catalyst, but arsenic oxide is poison. आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। साथ में मैंने बताया बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज की इस क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।